everyone. Our today's class of class 8, chapter 4, materials, metals and non-metals. And this is part 2nd of this chapter. In this part, we will study about chemical properties of metals and non-metals. First of all, there is a note that all metals exist in solid state at room temperature. That means in part 1st, we have already discussed all the physical properties of metals and non-metals. Then the physical state of metals are generally solid, but exceptions are always there. Mercury and gallium exist in liquid state, and this is very important. And the non-metals exist in all physical state. That means non-metals exist in liquid, solid and gaseous state. Solid non-metals, for example, phosphorus, sulfur and etc. And gaseous are oxygen, hydrogen, nitrogen, and the liquid non-metal is bromine, and this one is very important. Okay, then our next topic is chemical properties of metals and non-metals, in which the first chemical property is based upon reaction with oxygen, that how a metal react with oxygen and a non-metal react with oxygen. Then as we already know that rusting of iron, and the chemical equation for rusting of iron is 4Fe plus 3O2 plus XH2O, and the product is 2Fe2O3 dot XH2O. मतलब कि क्या होता है कि जो आयरन होता है वो क्या होता है मॉइस्चर के प्रेजेंट में, मतलब जब एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन एंड वाटर, तो उसकी प्रेजेंस में जो आयरन है उस पे क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है. तो रस्टिंग होने की वजह से उस आयरन के ऊपर कौन सी लेयर आ जाती है, मतलब ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि जो आयरन होता है हमारे पास में वो ऑक्सीजन एंड वाटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो X है वो क्या शो कर रहा है, दैट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिक्स्ड. ओके, और जब वो जब रस्टिंग हो जाएगी तब जो रस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2Fe2O3 dot XH2. ओके, एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, देन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे जो बर्निंग है, मतलब कोई भी अगर बर्निंग की प्रोसेस है वो किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो जो बर्निंग की प्रोसेस है वो प्रोसीड नहीं होगी. ओके, तो अभी हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, रस्टिंग एंड बर्निंग, ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड इन विच द फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. देन ferrous and magnesium are metals. Then this metal reacts with oxygen and form rust, and this metal magnesium reacts with oxygen form magnesium oxide. Then now we check the nature of these oxides. Okay, कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका नेचर क्या होगा. ओके, देन वी टॉक अबाउट रस्टिंग. देन टेक रस्ट फ्रॉम द आयरन एंड डिसॉल्व इन सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड चेक इट विद द लिटमस सॉल्यूशन, दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयरन, एसिडिक और बेसिक. Then when we check the water solution, the aqueous solution of rust of iron, then the litmus solution changes from red to blue. That means the red color of litmus is changes to blue color. Now what it indicates? Then it indicates that the solution, the aqueous solution of rust of iron is बेसिक इन नेचर. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आयरन का जो ये रस्ट बना है, जो उसका सॉल्यूशन हमने जो प्रिपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो उसका जो नेचर है वो क्या हो गया, तो उसका नेचर हो गया बेसिक. और हमने उसको किसकी हेल्प से इंडिकेट किया, तो हमने उसको इंडिकेट किया लिटमस पेपर से, जो कि क्या हो गया था, फ्रॉम रेड टू ब्लू चेंज हो गया था. ओके, देन नेक्स्ट वन इज
burning of magnesium. Then when the magnesium ribbon is burned, then magnesium oxide is formed. And now prepare aqueous solution of magnesium oxide. देखो सिंपली हमें क्या करना है, जो मैग्नीशियम है हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, बर्न करने के बाद में हमें क्या ऑब्टेन होगी, ऐश ऑब्टेन होगी। उसको हमें क्या करना है, डिसॉल्व करना है इन वाटर एंड देन check this solution with the help of litmus. Then the litmus changes from red to blue, and what it indicates? It indicates that the nature of magnesium oxide is basic. Okay, then water solutions of these oxides are alkaline or basic in nature. तो अभी हमने क्या किया कि जो भी इनके हमने मतलब कि जो इनके एक्वा सॉल्यूशंस हमने बनाए थे वाटर को मिक्स करके, वो कैसे नेचर थे, एल्केलाइन और बेसिक नेचर के थे। यहाँ पे और है तो मतलब वो एल्केलाइन और बेसिक इन नेचर। दैट मीन्स मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है इन नेचर। अब यहाँ पे अगर इनके रीजन की बात करते हैं, दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, देन क्या होता है कि जब हमने इसको वाटर के साथ में मिक्स किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तब क्या बनता है, देन प्रोडक्ट में हमारे पास बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज बेस। दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ the aqueous solution of magnesium oxide is basic. ओके तो यही रीजन है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ में मिक्स कर देते हैं तब जो प्रोडक्ट है उसमें क्या बनता है, एक बेस बनता है, और इसी बेस के प्रोड्यूस होने की वजह से द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द नेचर ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एनी मेटल ऑक्साइड इज basic in nature. That's why metal oxides are basic in nature. And the next one is reaction of non-metals with oxygen. Then reaction between sulfur and oxygen, and here sulfur is an example of non-metal. तो इनकी रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या करना है, टेक अ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। हमें एक डिफ्लेग्रेटिंग स्पून लेना है। डिफ्लेग्रेटिंग स्पून क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, मतलब यहाँ नीचे से क्या होता है, वो बेंट होता है। तो उस स्पून के अंदर हमें जो है वो पाउडर सल्फर लेना है एंड हीट इट। देन फर्स्ट सल्फर मेल्ट्स एंड देन इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। वो सल्फर क्या होगा, सबसे पहले मेल्ट होगा, बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। एंड देन टेक दिस स्पून इनटू अ जार एंड कवर द जार विद द हेल्प ऑफ लिड। और बाद में हमें उस जार को क्या कर देना है, कवर कर देना है। तो जब हम उस जार को कवर कर देंगे तो उस जार के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, जो ये सल्फर की जो गैस थी वो उसके अंदर पूरी कंप्लीटली फिल हो जाएगी। तो जब वो फिल हो जाएगी तब हमें क्या करना है, इस स्पून को उस जार में से रिमूव करना है, उसमें से हटाना है एंड कवर द जार and pour some amount of water into the jar and shake it very well. Okay? बाद में उस जार को हमें शेक करके क्या टेस्ट करना है, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, जो कि सल्फर की जो गैस थी और जो वाटर था, उन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसको हमें चेक करना है विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। एंड वी ऑब्जर्व दैट द रेड कलर ऑफ लिटमस डजंट चेंज बट the blue color of litmus is changes into red color, and what it indicates, that it indicates that the aqueous solution of sulfur is acidic in nature. Okay, and the chemical reactions in this wall activity is sulfur when reacts with oxygen then produce sulfur dioxide gas, and when sulfur dioxide gas reacts with water molecule then it produces H2SO3 which is known as sulfurous acid, and the sulfurous acid turns blue litmus paper into red, and it shows that non-metallic oxides are acidic in nature. Then here the first chemical property of metals and non-metals are that first metallic oxides are
basic in nature, and the second one is of non-metal, that non-metallic oxides are acidic in nature. Second chemical property is of reaction with water, that how a metal is react with water and how a non-metal react with water. Then different metals behave differently in their reaction with water, कि जो different metals होते हैं उनकी जो reaction होती है water के साथ में वो भी क्या होती है, different होती है. For example, first of all, sodium metal. Then sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. जो सोडियम मेटल होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो सोडियम मेटल है वो ऑक्सीजन एंड वाटर इन दोनों के साथ में विग्रसली रिएक्ट करता है. दैट मीन्स इतना फास्टली रिएक्ट कर देता है, जैसे उन दोनों आपस में जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी. देन the chemical reaction between sodium and water produces hydrogen gas. Then when sodium metal reacts with water, then what product is formed? Then hydrogen gas is produced. As a result, hydrogen and the metal catch fire. तो जब इनके रिएक्शन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो हाइड्रोजन गैस का नेचर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इज एन इनफ्लेमेबल गैस. मतलब हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या होती है, खुद जलती है, मतलब वो खुद ही बर्न हो जाती है. तो इसी वजह से, इसी हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस होने की वजह से द हाइड्रोजन एंड मेटल, विच मेटल, सोडियम मेटल, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम मेटल कैच fire, and the chemical reaction in this activity is sodium reacts with water molecule and produce sodium hydroxide and hydrogen gas, and in this chemical reaction a large amount of heat is evolved. Therefore it is stored in kerosene oil. और सोडियम मेटल की इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो सोडियम मेटल है उसको किसके अंदर स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल में. And next metal is magnesium. Magnesium reacts mildly with cold water but vigorously with hot water, producing magnesium hydroxide and hydrogen gas. तो हमने पहले क्या डिस्कस किया था, different metals react differently with water. Then sodium reacts vigorously with water, but magnesium reacts mildly. That means slightly with cold water, but it reacts vigorously with hot water. And when magnesium reacts with hot water, then it produces magnesium hydroxide and hydrogen gas. Okay, and the next one is zinc and iron. Neither react with cold water nor with हॉट वाटर. लेकिन जो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ना ही तो कोल्ड वाटर एंड ना ही हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, बट दीज मेटल्स रिएक्ट वेरी माइल्डली विथ स्टीम जनरेटेड ड्यूरिंग बॉइलिंग. बट जो ये मेटल्स होते हैं वो जो वाटर वेपर्स होती है, जो स्टीम होती है, उसके साथ में माइल्डली, दैट मीन्स स्लाइटली रिएक्ट कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन फॉर नॉन मेटल्स. That non-metals do not react with water. जो non-metals होते हैं वो water के साथ में react नहीं करते हैं. This property is helpful in protecting some of the non-metals which are very reactive. अब जो ये इनकी property है कि जो non-metals है वो water के साथ में react नहीं करते, तो ये जो property है इसका बहुत ही अच्छा यूज आता है इन non-metals को protect करने में. कौन से non-metals जो कि क्या होते हैं, very reactive. For example, phosphorus. Phosphorus is very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. जो phosphorus होता है वो बहुत ही ज्यादा reactive होता है. अगर हम उसको किसके अंदर expose कर देते हैं, air में, तो ये क्या करता है, जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ में रिएक्ट करके जो फायर है उसको कैच कर लेता है. देन टू प्रिवेंट द कांटेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर. तो इसी फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी की वजह से इसको किसके अंदर स्टोर किया जाता है, इन द वाटर, बिकॉज फॉस्फोरस डज नॉट रिएक्ट विद water.
then this one is second chemical property of metals and non-metals, in which the first one is metal differently react with water and non-metals do not react with water. Third chemical property is of reaction with acids, that how metals reacts with acids and how non-metals reacts with acids. Then non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids. And when metal react with acids, then they produce salt and hydrogen gas. For example, we take a metal ferrous and acid hydrochloric acid. Then the reaction between ferrous and hydrochloric acid, then the product which is formed is FeCl2, ferrous chloride and hydrogen gas. And when sodium metal reacts with hydrochloric acid, then sodium chloride salt and hydrogen gas is produced. Hydrogen gas burns with pop sound on bringing a burning matchstick near. तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है, इसके नियर जब हम क्या लगाते हैं, बर्निंग मैच स्टिक और कैंडल और एनीथिंग, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है, पॉप साउंड. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर. Then copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid and nitric acid. तो जो कॉपर है वो भी क्या है, मेटल है. तो ये कॉपर मेटल है, फिर भी ये क्या होता है, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ में रिएक्ट नहीं करता है इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद sulfuric acid which is H2SO4 and nitric acid which is HNO3. Next one is, we have already discussed that non-metals generally do not react, but sulfur, which is a non-metal, reacts with a hot concentrated nitric acid. And when sulfur reacts with nitric acid, then sulfur dioxide gas, nitrogen dioxide gas and water molecules are produced. Next one is reaction with bases. Then metals react with base to produce hydrogen gas. तो जो metals होते हैं वो भी base के साथ में react करके भी क्या produce करते हैं. First one is salt and then hydrogen gas. For example, there is zinc which is a metal, reacts with sodium hydroxide which is a base, then they produce Na2ZnO2 and the name of this compound is sodium zincate. Okay, and the byproduct is hydrogen gas. Next one is reaction of non-metals with bases are complex. लेकिन जो non-metals की reaction होती है base के साथ में वो क्या होती है, complex होती है. Okay, then these are some important chemical properties of metals and non-metals. First one, the reaction with oxygen. Then when metals react with oxygen, then they produce metallic oxides and the metallic oxides are basic in nature. When non-metals react with oxygen, then they also produce non-metallic oxides and the nature of the non-metallic oxides are acidic. Second one is reaction with water. Then different metals behave differently with water. Some metals react with hot water, some react with cold water and some react with steam, that means water vapors. Okay, and non-metals do not react with water. Third one is reaction with acids. Then non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids. And when metals react with acid, then they produce salt and hydrogen gas. And the hydrogen gas produce pop sound when burning matchstick bringing near. Okay, and some exceptions are there. And the last one is the reaction with bases. Then metals react with base to produce salt and hydrogen gas, and the reaction of non-metals and bases are very complex. Then with this topic, our part second of this chapter is now completed. Thank you.